So we are starting with magnetic effects of electric current. Electric current. उससे पहले let's try to understand what are magnetic effects. So let's start. आप सबने मैग्नेट अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा, ठीक है? So magnet is nothing but a something that is bipolar. So वैसे this is the north pole and this is the south pole, and then आपने पढ़ा था like charges repel and unlike charges attract. So अगर इसके अराउंड हम ऐसा ही कोई मैग्नेट ले आए जिसमें साउथ है नॉर्थ है, so then it will probably repel each other. And then if we do this in a different setup, north pole south pole and north pole south pole, they'll probably attract each other. So they will attract each other. So this is what we know about magnets. Okay, now magnetic effect in detail तो हम जाएंगे नहीं, but magnetic effect has a lot to do with the arrangement of electrons inside a atom. So how do they get itself arranged? So जब भी आप एक मैग्नेट को किसी ऑब्जेक्ट के मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के अराउंड लाते हो, लेट्स से अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, सो इसमें अभी तक जो इलेक्ट्रॉन्स थे दे हैड अ रैंडम अरेंजमेंट, ठीक है? यू बेसिकली थ्रू मैग्नेट अलाइन दीज एंड दिस अलाइनमेंट रिजल्ट्स इन इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. धीरे धीरे जब मैं आपको मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन दे चुका हूंगा, आई विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट फॉर द मीन टाइम लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड मैग्नेटिज्म एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. It is a simple force of attraction. Now, let's talk about a circuit and a current through a circuit. So, हमने एक effect पढ़ा हुआ है electric current का, that is, remember, heating effect. So, if we have a conductor, let's say we have a conductor, a switch placed in it, and then it's simply just connected to this switch. Nothing so special about this. It is carrying current. So we have the direction of current flow is from positive to negative. This is how the current is flowing. Now we know that जब इसमें current flow कर रहा है, it does have some heating effect. हमने heating effect पढ़ा था, H is equals to V into I into T. The heating effect is directly proportional to the current, potential difference and time. And this means that every conductor, no matter what the conductor is, what type of conductor we use, it will have some heating effect, okay, which will depend upon its voltage, current and time. So this heating effect would depend on all these three factors. मतलब ये जब current इसमें travel कर रहा है तो there is some heat that it is generating. Let's denote that by orange line. So this is some heat that is being generated through it. Okay, that is the reason कि हम कोई वायर जो बहुत देर से यूज हो रही है उसे टच करते हैं तो it's hot because it is producing heating effect slowly and they are stacking up over time, resulting in a high temperature of that wire. Okay, now along with this heating effect, the electric current also produces magnetic effect. Magnetic effect. तो देखते हैं magnetic effect क्या होता है. Magnetic effect is basically इस wire के around there are some magnetic fields that start to develop once the electricity, like once the current flows through it. So there are some field lines that are there. और field lines का मतलब क्या होता है? Let's say this is an object that is non-magnetic. Now a non-magnetic object, इसके around अगर मैं कोई चीज रखता हूँ, it has no influence on it. But around a magnetic object, it has some field lines, some invisible field lines. And अगर इन field lines के बीच में कोई object आता है, so it will basically attract it or repel it depending upon the object configuration or whatever it is. ठीक है? So this is a magnetic field and force जो कि उसे उसकी तरफ खींचेगा. How does this force work? What are magnetic field lines? How do they actually work? Why do they come into play? Are some of the high level questions that we will eventually be going to. But let's just understand that all magnets that we will be studying about, all magnets are bipolar. Let's understand the meaning of bipolar. Bipolar means उसके दो पोल्स हैं हमेशा. तो अगर मैं एक मैग्नेट लेता हूं, let's say I have a big bar magnet. We have
north, we have south. Let's break it. So let's break it from the center. The moment we break it, now the two parts of the magnet that we have north pole, south pole, north pole, south. Okay. Now you might think कि ये process तो continue करते हैं, इतना छोटा कर देते हैं कि possible ही ना. But the thing is, even if I reduce this to size of one atom, one side of the atom will face like north pole, behave like north pole, and one will face act like south. Now the problem with this is you will eventually study in magnetism that is theoretically proved that unipole can exist. So unipole, which means a single pole, can exist, mathematically proven, but we have not yet observed it. So we haven't seen something that is unipole, but we are saying that it can exist mathematically. So yeah, that's it. About magnets, they will always exist in bipolar form. मतलब अगर आप कितना भी उसे break करो, they'll always have one pole as north, one pole as south. They can never be a pole. They can never be a magnet जिसको आपने break कर दिया, उसमें सिर्फ एक ही pole है, दूसरा pole है. Now one of the question that arises is a horseshoe magnet. तुम्हें पता है horseshoe magnet क्या होता है? Yeah. You might have seen a horseshoe magnet somewhat like this. So in this type of magnet, there is a north pole and a south pole here. Now some might wonder कि इसमें तो एक डायरेक्शन में एक ही पोल है, मींस अगर इसके दो फेसेस की हम बात करें तो ये दोनों यूनिपोल रख रहे हैं. बट द थिंग इज इट्स नॉट ट्रू. इट्स नॉर्थ पोल. अगर यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, इट्स अपोजिट डायरेक्शन, हियर इज साउथ पोल एंड हियर इज नॉर्थ. ओके, बट द थिंग इज वी कैन नॉट एक्सेस इट बिकॉज इट इज इनसाइड दैट क्यूबिक. सो अ horseshoe magnet also is bipolar. Let's talk about Earth as a magnet. So, एक सेकंड कर देंगे सुबह लिखे. So let's make our Earth. So our Earth has slightly tilted axis, and यहाँ पे हम poles बुलाते हैं North Pole and South Pole. To what? जो हमारे axis के rotation points हैं, right? हम उसे ही बोलते हैं. Magnetic poles on the other hand, पहली बात, even दो लॉजिक ये कहता है कि मैग्नेटिक पोल एग्जैक्टली नॉर्थ पे होगा एंड मैग्नेटिक साउथ एग्जैक्टली साउथ पे होगा, बट दैट्स नॉट द केस. द मैग्नेटिक पोल्स इज स्लाइटली टिल्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एक्सिस एंड इट्स द अपोजिट ऑफ द पोल्स. सो द मैग्नेटिक पोल्स, अभी आप फील्ड लाइन सीखोगे तो you'll understand how I am making these lines, but these are something like this. There are field lines everywhere. So let me make better field lines so that you can see somewhat like this, going on from one place, going to the other, somewhat like this. So these are the magnetic field lines of Earth. And let's say the poles here are opposite to what the actual poles are. This is south, this is north. Okay. Now magnetic field of the Earth is very important because it prevents us from a lot of ionization energy and a lot of gamma rays also. So this is kind of like a magnetic shield. अगर ये shield नहीं होगी, so we will not be protected from even the sun's harmful rays. तो sun काफी type की rays आता है, काफी type की radiation करता है, and this magnetic field protects us from. ठीक है? And it's important to note that the north-south pole, we know that, are not exactly the magnetic north and south. And very interesting, जब पहली बार compass बना था, so पहली बार जब compass बना था, तो compass is a suspended magnet which has a north pole and a south pole. ठीक है, तुमने देखा होगा ऐसा compass होता है, उसमें basically freely suspended magnet होता है, and any freely suspended magnet would always point in the magnetic field of Earth, stating one of the poles will be north and one of the poles will be south. But initially जब वो observe करा गया था, तो the north one is pointing towards the north and south one pointing towards the south. Do you see a flaw in it? Yeah, it is the opposite of what it should have been, because north will be attracted to south pole and south will be attracted to north pole. So that was the original flaw in it, but still according, जैसे हमने electricity का convention लिया था कि from positive to negative flow करते चार्जेस, वैसे भी हम नॉर्थ साउथ पोल के कन्वेंशन लेते हैं जो इनिशियली सोचा गया था. ठीक है,
but that's how a bar magnet works. And even अगर आप कोई normal एक compass ऐसे work करता है, अगर आप कोई एक normal magnet लेते हो bar magnet and उसे suspend कर देते हो, freely suspend कर देते हो air में, then it will also point eventually after a while, जब वो अपनी normal state में आ जाएगा, तो it will point towards the magnetic south and north poles of the earth. Okay, बोलो. सर हम लोग जो कंपास की बेस पे कहते हैं कि पोलर एक्सिस ऑपोजिट या बस कंपास के रीडिंग के बेस पे का है पोलर एक्सिस ऑपोजिट होते हैं और No, the thing is कि earth does have magnetic field and there are a lot of equipment to measure it, but it's like your compass will point to that direction. That is what they're saying. So a compass can be used to know the magnetic field, like magnetic south and magnetic north of earth. So हमने बस ये जो मैग्नेटिक साउथ है वो ज्योग्राफिकल साउथ के ऑपोजिट होगा वो हमने बस कंपास की that is conceptually true. Like if you think about it, well, it's conceptually true. Like it cannot be like अगर दो ही poles exist करते हैं दोनों एक दूसरे से opposite है, so what can be the opposite of north? It will be south. It cannot be कि north is here and south is here. Then what else is the other part? It cannot be like that. If they're perpendicular, like opposites है बोलो. सर अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो सारे मैग्नेट को इस तरफ को जाने के Thing is कि Earth's magnetic field is not that strong in itself. So you need, like, is the same way as you studied gravity. कि हर चीज की अपनी gravity होती है. So I should be able to attract this bottle just by sitting here because I have mass, it has mass, and we have a gravitational force. But the thing is, the Earth's gravitational force is much more than that. That's the reason that we both are sticking to Earth rather than sticking towards each other. In the same way, जब आप दो magnets को पास में लाते हो तो उनकी जो magnetic field होती है, उनकी जो power of attraction होती है, वो that's much more than the Earth's magnetic field. That's why they attract each other. So it's just about the magnitude of that force. सर बोलो. सर ह्यूमंस में भी सर इस टाइप का कुछ मैग्नेटिक No, we do have like like gravity iron in ourselves, but not really. We do not have our own magnetic field. so because we do have a little bit of a gravitation but That is because of mass. yes Gravitational force is due to our mass. Anything that has mass will have a gravitational pull, but anything that's magnetic, that will have a magnetic force, not really everything. So that's it. Okay, let's see the different types. Or do you want to note this down? Do note this down. Let's study about the magnetic field lines now. So let's see the two types of magnet. पहले magnets देख लेते. तो magnets can be either we'll talk about two divisions. So let's say one of the divisions says it can be natural or artificial. And then another division says that it can be permanent or it can be electromagnet. Now, a permanent magnet always shows magnetic properties. It will always act like a magnet. An electromagnet will only act as a magnet when current is passed. Obviously, we'll not go into the details of types of magnet because our chapter is really related to magnetic effects of electric current. So we'll always only be talking about this electromagnets and stuff. We'll not be concerned about other stuff. And natural magnets are naturally existent, artificially created, can be permanent magnets also. We can artificially create permanent magnets. Also, अगर एक magnet के around आप कोई magnetic material रखते हो, मान लो there is a magnet, and then you place a iron bar around it. So iron bar. After a long time, that duration, what is that duration? We do not really, we are not really discussing that, but after a long time, it will also act like a magnet. So अगर आप magnet के around कोई चीज रखते हो, after a time, after a while, it will start acting like a magnet. Okay. Obviously, magnets have a lot of what do you say, applications. So I don't think I need to tell you the application of magnets. All of us have a magnet in our pockets right now. If you think about it, all of us have phones, and phones definitely have magnets. Anything with a speaker has a magnet. Okay. And then
every like what can be other examples of magnet? So some good examples of magnet would be, do you know about that CT scanner? So again, I'm not going into the details of how it works, but a CT scanner is a series of strong rotating electromagnets. Because in very strong magnetic fields, there are some things that changes in your body, and that's why it's not recommended, because you are exposed to very high magnetic fields. So that's why CT scan, अगर like I hope किसी का नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी का होता है तो they make sure कि सबसे पहले you are not having anything metal with you, ठीक है? And yeah, and मान लो like, because imagine you were shot, like this is one of the examples which I like to give for CT scan. So imagine you were shot, ठीक है? मान लो किसी को गोली लगी थी, and then they are going through a CT scan. So unless the bullet is removed, you would not go for a CT scan. The problem with it is, if you go through a CT scan, मान लो तुम्हें गोली लगी थी and your bullet is somewhere behind your head, like somewhere behind your head, and then because of that CT's strong magnetic field, that will be pulled through you, through your brain, and you will die because of that CT scan, even if you were not dead. So it's very important for doctors to make sure that the patient does not have anything metal. So piercings is a very good example. MRI, the thing is, the instrument, I think I'm talking about MRI. So I do think I'm talking about MRI. हाँ, जिसमें भी ये जाते हैं ना, I don't remember the exact name. So I guess CT and दोनों में ही इसमें जाते हैं, and एक ट्यूब सी होती है, and then you get scrolled into this. उसमें मेटल का तो कुछ नहीं होता, मेरा विचार पर भरी हुआ है। मेटल, अगर आप MRI के लिए जा रहे हो, ठीक है? हाँ, MRI, yeah. The full form of MRI is, yeah, I almost forgot about it. MRI stands for magnetic resonance imaging. So MRI की बात कर रहा था मैं, sorry, I said CT. So there are a series of, I would say, 3 big electromagnets, rotating electromagnets. जो आप इतना बड़ा वो सर्कल देखते हैं ना, उसके अंदर 3 rotating electromagnets होते हैं जो कि बहुत तेज rotate करते हैं, and then they create a magnetic field in which resonance imaging क्या होती है वो सब छोड़ो. But the thing mainly is कि there is very strong electromagnets there, and there have been cases जहाँ पे it has been fatal to patients. So in the room also कोई metal object नहीं होना चाहिए, because they are so strong electromagnets that अगर room में भी कुछ metal है, they attract that. So तो मेरे साथ 4-5 बार MRI, I don't think you have anything metal, so they would not be concerned. The thing is that there are other ways, and you would not. There are other ways also. MRI scan should not be the option, and will not be the option, because they would damage them. Because you do not want to do that. सबसे पहले जितने भी लोग piercings वगैरह करा के रखते हैं ना, उनकी सारी piercings remove होती है. So that is also one of the things, because this piercings will also interfere with that. So, and this is generally क्या होता है ना, आप एक्सरे में बोलते हो कि ये ना करने वो ना करने, तो उसमें आपको लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी. MRI is not one of the things जिसमें आपके मेटल हुआ तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी. They are very strong electromagnets. You could actually die. People have died because of this. I'm not kidding. So that is the reason. If you have like MRI of some other things, in जिसमें आपको मतलब किसी के ना बॉडी के अंदर, like if you know about this, so there are some mechanical parts fitted. So some people do not have their heart beating properly. So there are some mechanical parts fitted in earth, in your what are they called? Yeah. So they are also metal pieces. अगर आप उस condition में भी अगर जाते हो MRI कराने, then also you'll 100% die. That like you'll suffer through internal bleeding. So make sure you check that. Anyways, it's very important in this current world that you understand a lot of medical know-how, because even though आप में से काफी लोग doctors नहीं बनेंगे, लेकिन understand that only after you understand some things you can talk to a doctor, because doctors these days do not really tell you कि हाँ मतलब examples के थ्रू नहीं बताएंगे. They'll be very precise in their language. ठीक है, मान लो तुम्हें antibiotics का मतलब नहीं पता, ठीक है, and your doctor says you are allergic to antibiotics, and तुम random दवाई खा रहे हो, ठीक है, या फिर तुम्हें डॉक्टर बोलता है पैरासिटामोल ले लो, and तुम्हें पता ही नहीं क्रोसिन पैरासिटामोल है. So like that is the thing. So you should know about these things, because
You should understand how what doctors speak. So this is common knowledge. This is मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, ये काफी बच्चे भी बोल रहे हैं कि नहीं सुनना ही क्यों, हमने डॉक्टर थोड़ी बनना है. No, no, no. This is common knowledge. This is something you should know, even if you want to be in any field. अच्छा, next. Let's study about magnetic field lines. So पहले बनाते हैं, फिर देखेंगे. So अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, let's make a bar magnet. It has a north pole and a south pole. Magnetic field lines would look something like this. And they'll go from North Pole to South Pole. And these are imaginary lines. They do exist, we just cannot see them. Sorry. These are representative magnetic field lines. If you ever want to see the magnetic field lines, one of the experiments is just take any magnet and use some iron filling. Iron filling, समझते हो ना? So there are iron particles, very fine iron particles like dust. You can use that and you'll see a lot of magnetic field lines. Maybe we'll do that experiment. Let's just write the definition of magnetic field first. So magnetic field, the space around a magnet in which the force of attraction and repulsion due to the magnet can be detected. It's called the magnetic field. So now there is this one experiment in NCERT that is used to draw the direction of magnetic field lines. That experiment is somewhat like you take a magnet and then use a compass. So let's say this is a magnet, a big magnet, north south. And then you start with a compass, a small compass. So you place the compass on the north pole side and then note the direction of the needle. Okay.
So you note the direction of the needle. For example, this would be the direction of needle. अगर यहाँ पे होगा, then you continue doing this at different location, and you trace the path by this particular compass needle. What you notice is you get such lines. So yeah, this is what's the line you're getting to trace after tracing the direction of compass needles. तो वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट कि आपने एक नॉर्थ पोल लगाया, एक साउथ पोल लगाया, एक मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एंड देन ऑब्वियसली अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस साइड है, सो मैग्नेट वुड ट्राई टू फेस अपोजिट ऑफ इट, बिकॉज unlike poles attract, and then it will follow this magnetic field line pattern through it, and this is how you can get magnetic field lines of some magnet. So this is one of the simpler experiment जो कि mentioned है आपके book. सिर्फ आपने आयरो के डायरेक्शन में लिखी बनाया, ये तो बना है, सिर्फ ये नॉर्थ पोल है, सो नहीं दूसरे डायग्राम में नीचे वाले यस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल सही तो बना है. अच्छा नीचे, ओ सॉरी, नीचे गलत. मतलब मैग्नेटिक कंपास साउथ की तरफ पॉइंट करे, या एक मैग्नेटिक कंपास के अगर सामने अगर एक पॉइंट या अगर उसका ये पोल, फॉर एग्जांपल दिस इज द मैग्नेटिक कंपास का मैग्नेट, तो अगर इसका ये पोल नॉर्थ पोल है नहीं साउथ पोल है, so this north pole is faced towards the magnetic south and south pole is faced towards the magnetic north. लेकिन ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ पोल करेगा और ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ आएगा. Yeah, we could say that. Okay, now let's write some properties of magnetic field lines. Very important. Sometimes इससे question आता है simple. Properties of magnetic field lines. Let's see. So a magnetic field line साथ में लिख सकते हो आप, is directed from north pole to south pole outside the magnet. Now let's understand that with the diagram again. So जो हमारे magnetic field lines होती है, these are closed continuous loops. So ये बाहर, magnet के बाहर तो north pole to south pole जाती हैं, but magnet के अंदर, which is obviously not visible to us, they go from south pole to north pole. But these lines are closed and continuous curves. They do not like stop anywhere. So similarly, here also it will form something like this. Okay. So yeah, this would be your closed and continuous path. So outside the magnet, it is from north pole to south pole. Inside the magnet, it will be from south pole to north pole. Remember this. Next point. A magnetic field line is a closed and continuous curve. Next point. ये तो हमने देख लिया कि क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स होंगे. The magnetic field lines
are crowded near the poles, where the magnetic field is strong, and are far apart near the middle of magnet, near the middle of magnet and far of magnet, मतलब ये भी include कर लो, and far of magnet. अभी समझेंगे इस point को, where magnetic field is weak. So let's see. So we have a bar magnet. इस bar magnet में we have a north pole and a south. So if you make a lot of magnetic field lines, let's start by making a lot of magnetic field lines. They're getting further and further away. W. Okay. So now at this particular point, so अगर हम दो different points ले, so different points, अगर हम इस particular area की बात करें और इस particular area की बात करें, so you can agree that both these circles are almost congruent, ठीक है? So both these circles are congruent, but इस circle में कितनी magnetic field lines है? See, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 magnetic field lines here, and there are only 2 magnetic field lines here. If the strength of magnetic field is directly proportional to the magnetic field lines, इसका मतलब जितनी ज्यादा magnetic field line होगी उतना ज्यादा magnetic field strong होगा. इसका मतलब जो poles के पास magnetic field है वो बहुत strong है, and जैसे जैसे हम pole से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे magnetic field line क्या है? Weak है. Obviously अगर हम magnet से ही दूर चले जाएंगे तो magnetic field lines और weak हो जाएंगी, है ना? For example, this place, for example, this यहाँ पे magnetic field obviously weak होगी, and compared to this closer to the magnetic field would be more. So the further away we are from magnet, the less the strength of magnetic field. And strength of magnetic field या फिर ऐसे लिख सकते हैं, the strength of magnetic field, strength of magnetic is yeah, the strength of magnetic field is directly proportional to the number of magnetic field lines in a given area. So this is how you can understand the strength of magnetic field. So this is what we mean by weak and strong. So here the magnetic field is strong, and here the magnetic field is weak. Okay.
Note this down. 4. The magnetic field lines never intersect each other. इसी के साथ हम ये भी लिख लेंगे why, because if they do, yeah, there would be two directions of magnetic field lines which is not possible, or in the language of book, absurd. अच्छे अच्छे वर्ड लिख सकते हो आप. मतलब अगर हमारे पास अगेन एक पार मैग्नेट है, अगर दो मैग्नेट्स के लिए वो कर सकते दो के कर सकते हैं, एक सिंगल के नहीं करेंगे. सर नहीं, दो के भी नहीं कर सकते. नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट. कभी भी नहीं. अगर ये पास कर नहीं, ये कैन नॉट. अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा दो मैग्नेट नहीं. कंपास मैंने भी दिया ना कि एक पॉइंट पे कंपास दो डायरेक्शन हाँ, मतलब वो भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो आप. मान लो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एंड एक इंटरसेक्टिंग ऐसे है, ठीक है. तो इस पॉइंट पे अगर ये पॉसिबल होता तो इस पॉइंट पे कंपास क्या दिखा रहा होता? दो डायरेक्शन, ये भी एंड ये भी. क्या ऐसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल. बस अगर किसी पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे होते तो उस पे कंपास क्या डायरेक्शन दिखाता? ये डायरेक्शन में दिखाता, ये डायरेक्शन में दिखाता. ऐसा हो सकता है कंपास सेम टाइम पे दो डायरेक्शन दिखाए? नहीं. तो बस नॉट पॉसिबल. And last point, which is the case of parallel magnetic field lines. In case the field lines are parallel, they represent an equidistant, comma, they represent uniform magnetic field. Magnetic field. Magnetic field lines of a current carrying conductor. इससे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक्सपेरिमेंट टू शो दैट a current carrying conductor shows magnetic effect. So let's see हमें कैसे प्रूव करने वाले. So we'll make a simple circuit since हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है. So we can make a circuit. We make a circuit like this. And then हमने एक मैच बॉक्स लिया. मैच बॉक्स सबको पता है क्या होता है? I hope. So सर लेकिन इसका इनर वाला हाँ, मतलब something like this. इस मैच बॉक्स के अंदर हम रख देंगे कंपास. So एक कंपास रख देंगे हम एंड इसके अराउंड ये वायर को हम रैप कर देंगे. So इसके अराउंड वायर रैप कर देते हैं and then yeah, this is your circuit diagram. What would happen is जब हम स्विच को ऑन करते हैं, this compass will show deflection. Okay, deflection मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर जाएगा.
मान लो जब हमने ऑन करा ऐसे, सो करंट वाज फ्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो इट गॉट डिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ओरिजिनल उसकी ये पोजीशन थी, somewhat like this, and then it got deflected in this direction. Okay, next thing जो हम करेंगे is कि हम इसकी बैटरी की अलाइनमेंट अगर चेंज कर दें, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव नेगेटिव कर दें अगर हम, ओके, तो क्या होगा, द डिफ्लेक्शन वुड रिवर्स. So we can say that there is an inverse relation, so there is a relation between inverse वगैरह छोड़ो, there is a relation between direction of current This flow is and direction of magnetic field line. देखते हैं ये रिलेशन क्या होती है. this flow नहीं वो वाला नहीं पड़ेगा. is very आओ सीखे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना. सो सबके पास राइट हैंड है, आई होप, ठीक है. नहीं, नो ऑफेंस टू एनीवन अगर नहीं है तो, बट आई एम जस्ट आस्किंग. गुस्सा क्यों हो रहे हैं? We have a battery, we have a switch, ओके. ये कार्डबोर्ड पीस है, ये पूरा कंडक्टर है, दिस वन इज अ कार्डबोर्ड पीस. सो ये आपका कार्डबोर्ड पीस है. लेट मी जस्ट, क्या डिफ्लेक्शन हो रही थी, इससे हमने बोला कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो लेट्स सी, जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिस इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो ये हमारे करंट की डायरेक्शन है. नाउ ऑल ऑफ यू यूज योर राइट हैंड. सो जिस डायरेक्शन में आपके, या जिस डायरेक्शन में आपके थंब फेस कर रही है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां फोल्ड हो रही है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो इफ वी वर टू मेक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम कैसे बनाएंगे? येलो से बना रहा हूं मैं, लाइक कुछ सर्कल्स बना देते हैं इसके अराउंड, उनकी डायरेक्शन फिर लिखेंगे. सो दे वुड बी गोइंग फ्रॉम, अगर मतलब थम्स डाउन, दिस इज द डायरेक्शन, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? clockwise. या, सो दे आर गोइंग क्लॉकवाइज. Yes, yes. So this is how you'll make the magnetic field lines. But हमारी physics के यहाँ पे is over. So No, it's very normal to see that. हाँ So this is clockwise. करंट की डायरेक्शन क्या थी? करंट की डायरेक्शन ये थी. सो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, दे आर गोइंग लाइक दिस, clockwise. Okay. So very interesting. देख, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो सर्कुलर लूप्स में. ओके, नाउ ये सर्कुलर लूप की भी डायरेक्शन है एक पर्टिकुलर. दिस डायरेक्शन इज, सिंस वी आर फेसिंग द करंट की डायरेक्शन हमने इस डायरेक्शन में बनाई है, नीचे जा रही है. सो आर, हमारी उंगलियां कैसे फोल्ड हो रही है? दिस इज हाउ वी आर हैंड्स आर फोल्डिंग. हैंड्स आर फोल्डिंग लाइक हमारी फिंगर्स क्लॉकवाइज जा रही है, तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक. ठीक है. प्लीज 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 इस चैप्टर में जब भी किसी को समझ नहीं आए बोलना, बिकॉज यू विल बी कंफ्यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस टाइम पे समझ. जैसे अभी मैंने आपको कराया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ
through a straight conductor. Conductor. अब हम इसके बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ लूप. क्या बस समझा रहा. तुमने कभी वो खाया है वो पोटैटो जैसे? Magnetic field is expressed in टेस्ला. ठीक है. टी. सही ऐसा वाले नहीं आता सर मैंने साथ में लिखे नहीं टी लिखते हैं. फिर ओरिजिनल बात तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड को बाय लेटर बी डिनोट करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इज बी. ऐसा यूनिट रिप्रेजेंटेड इन टी. क्या बी 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 टी वो ऐसा ही यूनिट है. टेस्ला में मेजर करते हैं. बी मैग्नेटिक फील्ड है. जैसे करंट क्या होता है. करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई है ना. एंड देन इसकी एसआई यूनिट एम्पियर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. तो इसी तरह से ठीक. इसकी थोड़ी छोटी यूनिट होती है गॉस. एंड 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 to the power 4 गॉस. सो इसमें गॉस में यूज मेजर होती है की मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इट इज वेरी लाइक वीक फॉर अस. नो सर जो फ्लेमिंग से ज्यादा वो मतलब सर मेजर साइंटिस्ट हुए जाते तो सर टेस्ला को क्यों इसमें से ज्यादा मैं हिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रहा हूँ. I have no idea why are they named like that, but yeah, I can tell you कि क्या नाम है किसका, but I have no idea why is it named. सर नो लाइक टेस्ला में से और क्या में Maybe. Okay, लूप की करते हैं. कितने मिनट बचे. 4 मिनट बचे. लूप की कर लेते हैं. Magnetic field lines through a circular loop. क्या ठीक है. तो एक कार्डबोर्ड बनाते हैं एंड उसके ऊपर एक सर्कुलर लूप बनाते हैं. सो लेट्स मेक अ कार्डबोर्ड. यूज सम लाइंस. And let's make a circular loop over this. So a loop of wire, somewhat like this. Okay. एक ही बार बना दूं, 2 बना देता हूँ. And then ये नीचे से ओहो. Anyways, तो ये नीचे से ऐसे जा रही है. And they are connected to battery. So positive connected. Current की direction क्या होगी? Positive to negative. So this should be the direction of current. They are moving the current like this. Okay. बैठ जाओ कोई प्रॉब्लम. अच्छा यहाँ पे हम लगाते हैं. ध्यान से देखना. यहाँ पे हम लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल. तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज. सब बना के देखना. लाइक खुद अपने हाथों से करो तभी समझ आएगा. सो लूप्स लाइक दिस. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूविंग फ्रॉम. ऐसे अगर जा रही है तो ऐसे आ रहा है. ठीक है. सो
This is the direction they are moving, right? Similarly बोलो एक और बार, यहाँ इस पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ऊपर जा रही है करंट, तो हमारे हैंड उंगलियां किस साइड फोल्ड हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज फोल्ड हो रही है। सो मैंने वही आरोस बना दिए, ऊपर जाना करंट, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, तो ये ऊपर जा रही है करंट, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे करंट नीचे आ रही है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। सो दिस इज, सर आपने उसी डायरेक्शन में नहीं सही बनाई, सोच दोबारा, ऊपर जा रही है ना, तो तेरे उंगलियां कैसे फोल्ड हो रही है, ऐसे फोल्ड हो रही है। हाथ सो मैंने क्या डायरेक्शन बनाई है, ऐसे ही तो बनाई है, दिस इज हाउ आई हैव मेड, है ना। अब बीच की लाइंस यू कैन चीट टू ड्रॉ लाइक दिस, कि ये सारी लाइंस बीच में एक स्ट्रेट लाइन आएगी एंड देन समथिंग लाइक दिस। ये सारी लाइंस कैसे जा रही थी, ऐसे 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 ऐसे, एंड इफ यू नोटिस दैट दिस इज व्हाट वी हैव ड्रॉ। सो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेज पे बनाना हो सर्कुलर लूप का, सो लेट्स मेक अ फ्लैट सरफेस पे, अगर हम इसकी लूप की डायरेक्शंस देखें, सो दे वुड लुक समथिंग लाइक दिस। सो लेट मी मेक प्रॉपर्ली something like this, and similarly, oh, I don't want to copy, move aside. Sorry for the cheating, I hope you don't mind. So and then other lines जो होंगी, हमने क्या बनाई, यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज बनाई, एंड देन नीचे हमने एंटी क्लॉकवाइज बनाई। सो दिस इज हाउ वी मेड दिस डायग्राम, दिस इज, एंड देन बची हुई लाइंस को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये वो सर्कुलर लूप्स है जो कि पेज पे नहीं आ पाया हमारे, सो समवॉट लाइक दिस, बीच में बिल्कुल सेंटर में। सो यहाँ पे हमने करंट की डायरेक्शन क्या ली थी, बिकॉज दिस इज हाउ पेपर बुक्स में डायग्राम दिया होता है कि अगर ये आपकी सर्कुलर लूप है, सो दिस इज द सर्कुलर लूप, एंड देन उस सर्कुलर लूप में बुक में ऐसे डायग्राम दिए होते हैं, विच मेक्स इट वेरी मच कंफ्यूजिंग कि क्या हो रहा है, बट सिंस मैंने आपको उसका 3D वर्जन दिखा दिया, सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ना। समझ आया सबको क्या, तो ऐसे दिखाएगा जैसे नॉर्थ पोल, वो हम क्लॉक पेस रूल से पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक साउथ पोल हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्लॉक पेस रूल। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ढंग से समझो, क्योंकि पेपर में आपको ये नहीं आया कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू सर्कुलर लूप बना दो, आ भी सकता है, बट कभी कभी आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से कौन सी सही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, या फिर आपको कोई और ऑप्शन दिया जाएगा कि बताओ इसमें करंट की क्या डायरेक्शन है। सो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो रिमेंबर दैट, तो प्लीज अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। So this was magnetic field lines through a circular loop.